In business studies, we are in second chapter, principles of management. In previous videos, we read about principles of management, fuel principles of management, and we see that fuel principles of management is an administrative principle which focus on administration of an organization for a proper management and for achieving goal. Fuel felt that if administration is good and enough efficient, then any organization can easily achieve their goals. But from Fuel's approach, Taylor's approach is totally different. Taylor gave a scientific management principle. Taylor's approach is scientific towards an organization activities, and they felt that if a organization were scientifically managed and approached, then that organization can easily achieve the goals with less effort and in a better way. Taylor is known as the father of scientific management. The principle which given by Taylor, first of all, in this segment we have to be also define what is principles. Students, actually principles were sum of approaches, methods, vision and techniques towards a certain task. Principles, as we know that how a principle form. First of all, there is a hypothesis. Hypothesis हम लेते हैं. Hypothesis होता है. That hypothesis, when by various study and various experimentation, that is converted into thesis. And when thesis were accepted by mass people and it's valid for universal application, then it became theory. And a theory which is accepted and find true at every situation, at every places, that theory became principle. So principle were not created at a time. First of all, any person takes some hypothesis regarding some any work or task, then that hypothesis were converted by various survey programs and various experimentation and checkout points. That hypothesis were converted into thesis, and that thesis, when that thesis were universally accepted and applicable, thesis became theory. And when theory were applied on at mass level, that theory became principle. So principle is the sum of approaches, method, vision or techniques towards a certain work or task. और उस काम को प्रतिपादित करने के उन सिद्धांतों को हम समझ पाते हैं. टेलर ने जो सिद्धांत दिए वो मुख्यतः उनका वैज्ञानिक अप्रोच था टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्क और टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. उन्होंने संगठन के द्वारा जो लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है उसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से समायोजित और संगठित करने पर विचार किया था, और उन्होंने पूरे संगठन के कार्यों को वैज्ञानिक ढंग से समायोजित करने का पर बल दिया था. तो टेलर के प्रिंसिपल इस तरह से है. फर्स्ट उन्होंने दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. मैनेजमेंट में बॉस इज ऑलवेज राइट, या बॉस जो कहते हैं वो सही होता है. टेलर इसका विरोध करते हैं. टेलर कहते हैं कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन willing to work smoothly and also willing to get their goals smoothly and with less effort, then that organization has to be follow
the rules of science, and the rule of science is not a science, not rule of thumb. यानी विज्ञान जो है वो अंगूठे के नियम को नहीं मानता है. विज्ञान जो है वो तर्कशील है, और विज्ञान जो है वो सोच विचार के साथ कार्य को करने की सहमति देता है. वहाँ पर हम अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या हम वहाँ पर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं. विज्ञान चीज़ों को समझने और उसी की तरह से व्यवहार करने की हमें इजाज़त देता है. तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. और यहाँ पर टेलर ये मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा तरह से साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अगर उसमें कार्य को करना है, लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें साइंटिफिक अप्रोच लगाने होंगे, साइंटिफिक विजन लगाने होंगे, और जो सोचने का ढंग है उसको साइंटिफिक करना होगा. वहाँ पर हम साइंटिफिक अप्रोच से करें, और वहाँ पर रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा. तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस बात को कहते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. we have to be think scientifically, we have to be act scientifically and approach scientifically towards achieving a certain goal. Second वो कहते हैं harmony not discord. हार्मोनी का मतलब यहाँ पे वही स्प्रिट डी कॉर्प्स, जो हमने फ्यूल के प्रिंसिपल में आप लोग को बताया था कि स्प्रिट डी कॉर्प्स. यहाँ पे ये कहते हैं कि हार्मोनी का मतलब है तालमेल, और डिस्कॉर्ड का मतलब है विवाद, मतभेद इत्यादि. तो वो कहते हैं कि an organization only gets success or achieve its goal when there is a harmony in various departments, in various peoples of an organization, in various work culture. There should be a harmony, there should be a pleasant environment in an organization. There were no discord or disputes among peoples, among departments, and there should not overlapping of actions by different departments. तो that is harmony. Harmony not discord का मतलब है कि an organization only get achieve their goals when there is a harmony among organization. It means when there is a mutual relations between departments, between peoples, and between different work programs. Third, Taylor कहते हैं cooperation not individualism. In this theory, actually Taylor replace I from we. वो कहते हैं कि I को we से replace करना होगा. I from we, यानी मैं से हम लोग ज्यादा बेटर है. वो कहते हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए. वेन एवर ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू अचीव अ सर्टेन टास्क, that is important that the organization was wholly efforts for that particular task in a same manner. No one consider that organization is only on behalf of that person. If that person were not going to lead that organization, never achieve that goal. तो ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में के सभी लोग, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, दे ऑल आर इक्वल इम्पोर्टेंस, एंड दस इन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी a cooperation, not individualism. If suppose the top level management assume that top level management is overall, they can handle everything, they can think better from lower subordinates or middle level management, they can surpass orders from top level to subordinates, then that organization never be achieve a certain target. They say that cooperation is the prime need of an organization, and it is only possible when in an organization top level management replace the word I from we. जब मैं को हम लोगों से जब हम रिप्लेस कर देते हैं, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग पीपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ओनली दैट ऑर्गेनाइजेशन एबल टू अचीव गोल्स. सो द थर्ड प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. चौथा उन्होंने कहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. As we know that organization is never built by a single person, it is always built
by a group of people, and when group of people work in an organization, there must be from the organization point of view, a good organization always willing to get the full utilization of its all types of resources, as well as physical resources as well as human resources. And from personal point of view, it is assumed that a person must have to contribute 100% to organization, because the organizational goal is coincide with personal goals. When organization get ahead or organization get upper, the personal individual goals also get facilitated from the organizational goal. Thus, the development of each and every person to his or greatest efficiency, it means that for a better organization, it is must that every organization try to get 100% contribution from every individual in a good sense. And organization individual also prompt to provide 100% contribution to the organization. For this, a organization have to give opportunity to every individual to get their greatest height in their profession, and for this promotion, financial assistance and motivation that is needed by an organization. तो development of each and every person to his or greatest efficiency ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. एक ऑर्गेनाइजेशन में वे व्यक्ति ज़्यादा खुलकर काम कर सकते हैं जिनको ये पता होगा कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उसमें उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें एक व्यक्ति जो साधारण सा व्यक्ति जो दरी बिछाता है, जो झाड़ू लगाता है, जो बहुत लोअर एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता है, लेकिन अगर वो संगठन में है तो वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है. दैट इज द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ each and every person to his or greatest efficiency. So identification of efficiency, identification of quality is a prime need of an organization for survival in future. And in